Hello dear students, welcome to IFS Online IIT Jam. Now we are starting the lectures on the IIT Jam and it is now available for you all guys. So today we are introducing one very important topic from the IIT Jam syllabus and that is from the biology part से मैं एक interesting topic पढ़ाने वाला हूँ, that is eutrophication. What is exactly eutrophication? आइए समझने की कोशिश करें. Eutrophication is a kind of condition if the nutrient level it is get increased into any kind of water body. So it is simply the increased level of nutrient in any type of water bodies. अगर किसी water body के अंदर nutrient level बहुत high हो जाता है तो ऐसे water body को हम eutrophic water body या eutrophic lake कहते हैं. Now what is exactly this entire eutrophication? इसे समझने के लिए अब हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं the various types of conditions what we can observe in a lakes. So जो भी lakes हैं on the basis of nutrient contain and on the basis of primary production, on the basis of these two categories, that is nutrient contain and primary productivity or primary production, the lakes they are categorized into three different types of lakes. What are those three different types of lakes? These three different types of lakes are oligotrophic lake, mesotrophic lake and eutrophic lake. What is exactly oligotrophic lake? Oligotrophic lakes are the lakes with minimum nutrients. So it is just a minimum nutrients. So अगर किसी वाटर बॉडी के अंदर मिनिमम अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट प्रेजेंट हो तो उसे ओलिगोट्रॉफिक लेक कहते हैं. अगर ये मॉडरेट अमाउंट में प्रेजेंट हो, सो मॉडरेट अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट हो, उसे मेसोट्रॉफिक लेक कहा जाएगा. एंड इफ द न्यूट्रिएंट इज प्रेजेंट इन अ very high amount of nutrient if it is present, then such type of lakes are called as a eutrophic lake. So these are the different types of lakes what we can observe. So any type of water body after its formation, that water body continuously face a gradual changes inside, and that gradual change will generally occur into the newly formed lake in which it is converting from oligotrophic to mesotrophic, mesotrophic to eutrophic. This entire process is called natural aging of water bodies or lake. So हर एक वाटर बॉडी में, हर एक लेक के अंदर इस तरह का कंटिन्यूस ग्रेजुअल चेंज होता रहता है जिसे हम नेचुरल एजिंग ऑफ वाटर बॉडीज कहते हैं. Now, if you're talking about the oligotrophic lake, so what are the features of oligotrophic lake? What is the feature of mesotrophic lake? And what is the feature of यूट्रोफिक. लेकिन तीनों में क्या डिफरेंस है, क्या क्या अलग बातें हैं, उन्हें इंट्रोड्यूस करना शुरू करते हैं. सो फर्स्ट we are introducing the oligotrophic lake. Oligotrophic lakes which contain a very low amount of nutrient, then deep bottom is very deep and the water is comparatively very clear. Along with that we can see that type of water bodies are highly rich in oxygen and comparatively the primary productivity will be very low. Primary productivity बहुत ही कम होती है, बायोडाइवर्सिटी भी बहुत कम होती है और डिजॉल्व ऑक्सीजन का अमाउंट बहुत ज़्यादा होता है. और अगर हम बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड की बात करें तो ये बहुत ही कम होता है. सो दिस इज़ द यूनिक फीचर ऑफ ओलिगोट्रॉफिक लेक. अब अगर हम मीजोट्रॉफिक लेक की बात करें, सो मीजोट्रॉफिक लेक्स दे कंटेन कंपेरेटिवली मोर अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट. सो द फीचर्स आर मॉडरेट अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट इज प्रेजेंट, organic matter will be there comparatively more than the oligotrophic lake. Along with that we can see the oxygen level will be may get change in mesotrophic lake. बॉटम के पास जो ऑक्सीजन की अमाउंट होती है वो कंपेरेटिवली कम होती है, अपर सरफेस पे ऑक्सीजन की अमाउंट कंपेरेटिवली ज़्यादा होती है. सिमिलरली द मॉडरेट अमाउंट ऑफ प्राइमरी प्रोडक्शन विल बी ऑब्जर्व and the maximum biodiversity it is observed in case of moderate or we can say mesotrophic lake. Mesotrophic lake में biodiversity बहुत ही ज़्यादा निकल करके आती है. So that was the feature of mesotrophic lake. Now what is the feature of oligotrophic lake? Sorry, eutrophic lake. Eutrophic lake की जब कभी भी हम बात करेंगे तो उसके क्या features हैं? Eutrophic lakes, they are a kind of lake where the water contain a very high amount of nutrient. जैसे ही water body के अंदर nutrient content बहुत ही high हो जाता है, ऐसे water bodies को हम eutrophic lake कहते हैं. Now this entire high amount of nutrient it may affect the water body in a various ways. क्या क्या effect आ जाते हैं इसकी वजह से, उसे समझिए.
that entire water bottom it becomes shallow, जो base है वो shallow हो जाता है, water जो है वो cloudy हो जाता है, muddy हो जाता है, उसी के साथ साथ very high primary production. The primary production will become very high in such type of lakes. The very low amount of biodiversity will be observed. Biodiversity बहुत ही तेजी से घट जाती है, dissolved oxygen low हो जाता है, biological oxygen demand बहुत ही high हो जाता है. That is a unique feature of eutrophic lake. So any type of water body if it is going under a natural aging, तो ये सारे के सारे बदलाव natural तरीके से उसमें देखने को मिलते हैं. So each and every water body they have to become a eutrophic after some time because of the continuous addition of nutrient inside. So this type of aging of water body is simply called as a natural aging. इस तरह के aging को हम natural aging कहते हैं. But if water body it is get added or if it get a very high amount of nutrient because of the human activities, अगर किसी water body के अंदर human activities की वजह से nutrient level high हो जाता है, so that type of eutrophication is simply called as a cultural eutrophication. तो दो तरह के eutrophications होते हैं, natural eutrophication and cultural eutrophication. And cultural eutrophication can accelerate the aging process or the aging rate. कल्चरल यूट्रोफिकेशन की वजह से जो एजिंग है वाटर बॉडीज़ की वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है, बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाती है. नाउ व्हाट काइंड ऑफ इफेक्ट वी कैन ऑब्जर्व इफ द न्यूट्रिएंट लेवल इट इज गेट एनहांस इनटू द वाटर बॉडी बिकॉज ऑफ द ह्यूमन एक्टिविटीज़. ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से अगर किसी भी वाटर बॉडी के अंदर न्यूट्रिएंट लेवल हाई हो जाता है, मतलब यूट्रोफिक कंडीशन आ जाती है, सो इट विल लीड्स टू द ग्रोथ ऑफ algae inside the water body, and that is called as a algal bloom. Very high amount of algae they will start growing inside the water body. Mainly cyanobacteria will start growing inside the water body, and once these cyanobacteria they will get die, the dead organic matter will be get produced. and dead organic matter की amount जैसे ही ज़्यादा हो जाती है वाटर बॉडी के अंदर बैक्टीरियल ग्रोथ शुरू हो जाती है, and this bacterial growth it may affect the overall water body. So bacterial growth will be get observed, and the bacterial growth की वजह से हम देखेंगे कि जो वाटर बॉडी है वो पूरी तरह से ग्रीनिश हो जाता है. That entire surface of water body it is get turned into the greenish coloration, and because of that green coloration which is get filled into the water body and bacterial growth, it make that entire water body comparatively very dirty. बहुत ही foul smell आती है, जो water है वो बहुत ही cloudy हो जाता है. So this is the overall impact of eutrophication. So this is just a simple representation ki how the high amount of nutrient, that is eutrophication, can affect the water body or the health of the water body. Now this is an image which is representing the overall transformation because of the eutrophication. So this is what the overall result of eutrophication what we can observe in any type of natural water body. So this was about the eutrophication concept. I hope आपको चीज़ें समझ में आई होंगी. बहुत ही easy और बहुत ही simple सा concept है, but questions आते हैं इस topic से. So just keep learning. Stay tuned with IFS. Definitely you will get a lot of information. You can get a lot of benefit in your exams of IIT JAM. Now subscribe our channel or subscribe our other things. We are present at various platforms, for example Facebook, Instagram, Telegram, सारी जगहों पर हम available हैं. You can join us on the various platforms which is available, and you can enjoy, you can ensure your success in IIT JAM. So thank you dear students, thank you so much.